Hello, my dear students. Welcome to the class. I am Shriti Sharma. Let me see if I have properly gone live or not, whether I'm audible. So let's see what's the scene. Oh yeah, I am. Great. Chaliye. So like I said, welcome to the class. Hope all of you are in the best of health and spirits. So this is some information about me. I am Shriti Sharma, like I already mentioned. This is my educational background. Apart from that, I make it a point to write CAT every year. I score a great percentile in the verbal section. Apart from CAT, I also write, but not, I write CAT every year, but then depending on my mood, I also write SAT. I do well in SAT in the English section and the decision making one as well. I write CMAT, CET intermittently, SNAP. As that I already told you, NMAT. I've been the verbal head in various institutes pertaining to CAT and other management entrance exams coaching, and I have more than 12 years experience of teaching in this field. All right. Okay. Atul, English, yeah. Is that English question mark? Is that English hello? All right. So अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए. क्या करना है? Install the Unacademy learning app and start learning. You can definitely, at least unlock the free special classes. उसके लिए आप मेरा कोड यूज कीजिए. माई कोड इज शर्मा जी. तो क्या करना है आपको? Unacademy का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन पे. वी ऑल्सो कंडक्ट फ्री स्पेशल क्लासेस. आप वो भी अटेंड कर सकते हैं. राइट. द नेक्स्ट फ्री स्पेशल क्लास इज ऑन वेंसडे और पुराने रिकॉर्डिंग्स तो हैं. यूज माई कोड शर्मा जी to unlock those classes. Join me on our Telegram channel, that is Shriti_cat. SHRITI. तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. रंग करना. हेलो रंग करना. Hope you're doing well. Hope you're doing great. अच्छा, these are the subscription plans. I'll tell you about the subscription plans a bit later into the class, but जैसा मैंने कहा कि आज हम बहुत कुछ प्रैक्टिस करेंगे एंड इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज यू गाइज हैव स्टडीड द बेसिक्स नाउ. है ना. आप पुराने वीडियोस में, पुराने क्लासेस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं ग्रामर के. स्पेशल क्लासेस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं. सो व्हेन वी डू दीज क्वेश्चंस एंड इफ थिंग्स आर नॉट क्लियर टू यू, ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन देम, बट ऑल्सो एक बार कॉन्सेप्ट्स का नाम लिखते जाना जहाँ पे ज्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी है एंड गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोज. आपको ये हैशटैग डेस्टिनेशन 100% में भी मिल जाएंगे वीडियोज. और उसके अलावा जैसे मैंने कहा अनअकैडमी लर्निंग ऐप में भी फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स डिटेल में कराए हैं. टॉपिक्स लाइक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टॉपिक्स लाइक सब्जेक्ट प्रोनाउन अग्रीमेंट, टेंसेस तो हमने यूट्यूब पे पूरा किया था, एडजेक्टिव्स हमने किया है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, मॉडिफायर्स किया था यूट्यूब पे ही. तो आप वो सारे वीडियोस बाद में चेकआउट कर सकते हो, बट ऑल्सो कीप एन आई आउट की किन टॉपिक्स में क्लैरिटी कम है. ठीक है. हम क्वेश्चंस तो सारे डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. हेलो तन्मय. All right, a bit about the subscriptions that we have on Unacademy. There's the Plus subscription, जिसमें आपको live classes मिलते हैं, weekly tests, structured courses, unlimited access. अब उसमें study material भी मिलता है. And there is the Iconic subscription where you get, apart from all these things, you also get personal guidance, one-on-one interaction with your teachers. You can book your own doubt sessions. You get study planner. You get study material. Test analysis. हमेशा मैं कहती हूँ test analysis extremely important होता है. Writing test is important. After that, analyzing it to make sure that the same mistakes are not repeated again is another very important thing. तो चलिए ग्रामर से शुरुआत करते हैं. ग्रामर करेंगे, उसके बाद हमारे पास पैसेजेस भी हैं, पैसेजेस भी करेंगे. तो we'll practice it all. Let's start with grammar. All right, guys. क्वेश्चन देखना है. You have to figure out which part has an error in it. Of course, एक ऑप्शन आप ये भी कह सकते हो no error का. I mean, I have not added that. I could have added. यहाँ पे मैं ऐड कर सकती थी e करके no error. बट मैंने सोचा कि मैं आपको बोल दूंगी एंड दैट वुड बी एनफ. ठीक है. तो हर ऑप्शन में एक ये नो एरो का भी ऑप्शन है आपके पास. ऑलराइट. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. बिफोर ही स्टार्टेड आउट he had collected all the informations about the country he was going to visit. I'm pretty sure all of you would know the error here, so I don't think I need to wait for your answer, but I want to discuss something else here. Error तो यहाँ पे बहुत सिंपल है. Error क्या है? ऑप्शन सी में है. इंफॉर्मेशन जो वर्ड है उसका प्लूरल फॉर्म इंफॉर्मेशन नहीं होता है और ये आई थिंक आप सब जानते हैं. नहीं पता हो तो लिख लेना. इंफॉर्मेशन सिंगुलर इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्लूरल इज इंफॉर्मेशन. बेसिकली इंफॉर्मेशन हैज ओनली वन फॉर्म एंड दैट इज इंफॉर्मेशन. ठीक है.
Like I said, I'm pretty sure all of you know this. नहीं पता है तो लिख लीजिए. What else do I want to discuss here? और कुछ एरो नहीं है, बट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. ये देखो, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, बट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स देखिए और टेंस देखिए. बिफोर ही स्टार्टेड आउट, यानी उसके स्टार्ट आउट करने के पहले उसने क्या किया? सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया अबाउट द कंट्री ही वाज गोइंग टू विजिट, राइट? तो क्या रूल हमने पढ़ा है टेंस के लिए कि इफ देयर इज अ सेंटेंस इन विच देयर आर टू और मोर एक्शंस इन द पास्ट टेंस, पास्ट में ही दो या दो से ज्यादा एक्शंस हो, तो जो सबसे पुराना एक्शन होता है, सबसे पुराना उस सेंटेंस में सबसे पुराना एक्शन, वो हम किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट में, राइट? और ये आपने यहाँ पे किया है कि बिफोर ही स्टार्टेड आउट, यानी स्टार्ट आउट करने के पहले उसने सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, तो ये सबसे पहला एक्शन हुआ, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में है. और स्टार्ट आउट ऑफ कोर्स इसके बाद हुआ, तो ये सिंपल पास्ट में है. ऑलराइट, आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ रिमाइंड यू ऑफ दैट रूल. यू कैन टेक दिस डाउन एज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट रूल. सेकंड पे आते हैं. The assurance that he will cured from the disease pleased him very much. Why don't you guys try it out? Tell me which part is wrong in the second one. Very good. रन करना. परफेक्ट. परफेक्ट दम है. राइट. बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि ही विल क्योर तो कुछ नहीं होता है. या तो ही विल क्योर, दैट मीन्स ही विल क्योर समबडी एल्स, बट द फ्रॉम द डिजीज नहीं आएगा, राइट? ही विल क्योर हिज पेशेंट, ऐसा आता है. पर ये खुद क्योर होगा, सो इट्स इन पैसिव वॉइस, सो इट शुड बी वो खुद क्योर होगा, सो ही विल बी क्योर्ड. परफेक्ट. बी इज इनकरेक्ट. बट बताइए, हर एबिलिटी टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इज वन ऑफ हर स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स. This is one of her stronger points. या तो आप कह सकते हो इट इज वन ऑफ her ability to talk to strangers is one of her strong points कह दो कि उसके बहुत सारे strong points में ये एक है. या फिर कह दो is one of her strongest points, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके चार पांच strongest points हो at the same level they are the strongest, but stronger नहीं, because then stronger compared to whom or compared with whom. So either you say blah 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 is one of her strong points or is one of her strongest points. ये बोलना कि is one of her stronger points is grammatically incorrect, दो in colloquial English, in conversational English हम बहुत बार यूज कर लेते हैं, पर वो गलत होता है. ठीक है, comparative नहीं यूज करेंगे one of के साथ. My brother, हाँ, फोर्थ का आंसर बताइए. ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया है आपने, रूल पता है आपको. Perfect. So whenever this is used, yeah, along with. एंड नहीं है ना, अगर होता माई ब्रदर इन लॉ एंड हिज डॉटर तो ठीक है, पर अलॉन्ग विथ अगर यूज कर रहे हो, यानी कि आगे जो भी वर्ब आएगा, व्हाट इज द वर्ब? ये है आपका वर्ब वाज, सॉरी, वर वर लिखा है, पर जो भी हो, जब भी अलॉन्ग विथ यूज होता है, द वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, विच इज माई ब्रदर इन लॉ, विच इज सिंगुलर, सो इट शुड बी वाज. ऑलराइट. और ये दिस रूल इज फॉलोड इन केस ऑफ अलॉन्ग विथ. It is also followed in case of together with. Along with की जगह अगर together with होता, then also you'd have followed this rule. उसकी जगह अगर accompanied by, in addition to, with can also be used as a conjunction. ऐसा कोई भी phrase use होता as a conjunction in the first part, so the verb would agree with the first subject. Very good Tanmay. Very good run करना. Both of you got the answer. Perfect. फिर देखते हैं. After you will return from America, I will come and see you.
Oh, you're saying after your, yeah, even that could be an answer. After your return from America, I'll come and see you. या तो आप ये कहो, या फिर after you return, simple present tense में ही आता है, ठीक है? After you return from America, I'll come and see you. जैसे कि मैं कह सकती हूँ, after you finish the work, I will proceed. After you are done with this question, you are done. You are done भी simple present हुआ passive voice में. After you are done with this question, I will proceed. Okay. After you read the book, you will feel better. I hope you're getting the structure that I'm talking about. और आपने जो आंसर बताया after your return from America, even that is pretty good. स्ट्रक्चर के लिए आप और एग्जांपल्स लिख लो अगर डाउट हो, कोई भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर करके. पास्ट में नहीं जा रहे हैं, आगे की बात अगर कर रहे हैं तो आगे तुम ये काम खत्म करोगे तो और कुछ काम करेंगे, तो वो पहला जो है आफ्टर यू वाला वो सिंपल प्रेजेंट में आता है. After you study grammar, you will be able to answer the questions. After you attend the special class, you will be able to answer the questions. You will have better clarity on the concept. Okay. Next देखते हैं. The child picked up a burned paper from the debris left by the inferno. Left behind by the inferno. I'm sorry. Left behind by the inferno. Inferno का एक meaning क्या होता है? A very big fire. Right, a very big fire. कुछ आ रहा है क्या आंसर? The child picked up a burned paper from the debris left behind by the inferno. देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है burned, आपको दिख रहा होगा कि ये adjective की तरह यूज हुआ है ना. It's not used as a verb. I think you can see that it's used as an adjective. Paper आपका noun हो गया, article हो गया. तो ये burned जो है ये adjective की तरह यूज कर रहा होता. Now burn का adjective form burnt नहीं होता है. burn का adjective form होता है burned. ओके, लिख लीजिए अगर नहीं पता हो तो. और डी में एरो नहीं है, एरो है बी में. सो प्लीज राइट इट डाउन. बर्न का एडजेक्टिव फॉर्म बर्न्ड नहीं होता है. बर्न का एडजेक्टिव फॉर्म केवल बर्न्ड होता है, BURNT. सो प्लीज राइट इट डाउन. ऑफ कोर्स ING फॉर्म में भी हो सकता है, पर ये द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्निंग पेपर, तो बर्निंग पेपर वुड नॉट बी राइट हियर. So the adjective form is not burned, BURNED, it is burnt. Adjective, ठीक है. वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं. वर्ब में दोनों होता है, burned भी होता है BURNED और burnt भी होता है वर्ब में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. When she finishes her studies, she wants to become a journalist. बताइए, what should be the correct answer here? Very simple, no? Seventh one is very simple. Vidushi. Very nice name, Vidushi. You're right. It should be when she finishes her studies. Perfect. Perfect. क्योंकि ऐसा तो कुछ स्ट्रक्चर होता ही नहीं है. शी इज प्लेज नहीं ना, शी इज स्टडीज नहीं, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. राइट, सो व्हेन शी फिनिशेस सिंपल प्रेजेंट टेंस. परफेक्ट. बी. एथ ट्राई कीजिए. देयर वर टू चाइल्डहुड बडीज हु वेंट थ्रू स्कूल एंड कॉलेज एंड वुड इवन जॉइन द आर्मी टुगेदर. देखो पूरा पास्ट में है. देयर वर टू चाइल्डहुड बडीज. इट्स नॉट लाइक देयर आर टू चाइल्डहुड बडीज, ऐसा नहीं है. Who went through school and college and even would even join and even joined the army together. या तो आप कह सकते हो and even joined the army together, या फिर ये भी कह सकते हो and who even joined the army together. Right? Who मतलब आप चाहो तो रिपीट करो, चाहो तो मत करो. Both ways it is correct.
who went to school and college. देखो who went to school and college मतलब स्कूल और कॉलेज जाना. went through school and college मतलब स्कूल and college complete करना. उन्होंने they went through school and they went, for example, I went through school and college. I and my best friend went through school and college together. यानी हमने school and college साथ में complete किया, इसलिए through है. हाँ, अगर अभी मैं स्कूल में हूँ और स्कूल जा रही हूँ तो it will be I am going to school. तब through नहीं होगा. Went through school would mean completed school. Alright. Okay. Even joined. Correct. Very good. Perfect. Wonderful. आगे देखते हैं. When a person refuses to forgive, he is locking doors that someday he might be needing to open. All right, you're saying, Karna, you're saying, be needed. Okay. He is locking doors that someday be needed to open. Someday he might be needed to open. Or simply someday he might. Hello, Adrika. someday he might. be की जरूरत नहीं है ना. देखो, he भी लिखा है. He might be needed मतलब, for example, you might be needed यानी तुम्हारी जरूरत होगी. पर हम कह रहे हैं you might need to open the door यानी तुमको जरूरत होगी डोर ओपन करने की. तो be हटा दो, he might. be हटा दो, he might need to open. अच्छा, needed क्यों गलत है? Because need नहीं पता है तो सुन लीजिए और लिख लीजिए. Need as a verb is not used in the ing form. ठीक है, लिख लो कहीं पे अच्छे से लिख लो. जब हमने टेंसेस किया था तो आई हैड डिस्कस दिस विद यू गाइस कि कुछ वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते हैं. यू गाइस रिमेंबर दैट. मैं उसका एग्जांपल आपको याद दिलाती हूँ. फॉर एग्जांपल, लव एज अ वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है. तो इनफैक्ट मैकडोनल्ड्स जब कहता है आई एम लविंग इट तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. I love it is grammatically correct, but then brands or you know brands हो गया, series हो गया, ये सब चीजें creative liberty लेते हैं. They don't bother about grammar. So I am loving her. Wrong. I love her. I'm loving my mother. No, I love my mother. Right. वैसे need is also another verb which should not be used in the ing form. I am needing a help from you. No, I need a help. Okay, I need help from you. Okay. I need help from you, not a help. I'm sorry about that. I need help from you. I'm not needing help. I'm needing a book. No, I need a book. Okay. चलिए आगे देखें. I hope it's clear. और प्लीज लिख लो need ing फॉर्म में verb में as a verb need is not used in the ing form. ऐसे बहुत सारे verbs होते हैं. एक एग्जाम्पल दूसरा हमने जो डिस्कस किया साथ में वो है love. ऐसे और भी हैं जो हमने टेंसेस की क्लास में लिखा था. And I'll keep on touching upon it whenever we come across such a question. If you have someone with all the ability, but if he is not dependable, do you want him as a part of your team? देखो, ऑलरेडी आप एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिखा चुके हो ना, इफ. तो आपको इफ रिपीट करने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव समवन विथ ऑल द एबिलिटी बट ही इज नॉट डिपेंडेबल, या फिर ही भी हटा सकते हो. आई मीन ही रखो या हटाओ डजंट मैटर. ये ऐसे भी कर सकते हैं. इफ यू हैव समवन with all the ability but is not dependable, ऐसे भी कर सकते हो. या फिर but he is not dependable. The point is don't repeat the if. आपने दिखा दिया है कि hypothetical scenario है. ठीक है, तो don't repeat the if. ठीक है, आगे बढ़े. So C was wrong in the 10th one. कुछ डाउट है आपको? Alright. 11th देखते हैं. While it is not worth to have been holding grudges is like खुन्नस. It does not make sense to be bitten time and again. मतलब ओवरऑल आइडिया सेंटेंस का ये है कि ये सही नहीं है कि हम ग्रजेस होल्ड करें, किसी के अगेंस्ट खुन्नस रखें.
पर ये भी even that is not sensible कि बार बार धोखा खाएं, right? So I mean that is something in life which is difficult to balance. कि grudge भी मत रखो पर धोखा भी मत खाओ. Nonetheless, what is grammatically wrong in this sentence? Which part is wrong? Time and again. Oh, time and time again. नहीं. Time and again is the correct phrase. बार बार के लिए इंग्लिश में हम कहते हैं time and again. So it's correct, huh? Please write it down as well. मतलब बार बार. To hold grudges. Okay. देखिए, to hold grudges correct है. To have been holding grudges भी correct है. मतलब grudges hold करते आ रहे हैं. But yeah, the first part should be while it is not worth नहीं, while it is not worthy. कभी नहीं कहते ना it is not worth, it is not worthy. She is not worth, no, she is not worthy of the job. Tom is not worth of the job, no, Tom is not worthy of the job. वो एक अलग फ्रेज होता है, वो एक अलग फ्रेज होता है, is it worth it, right? तो वो तो अलग चीज हो गया. But otherwise, I am not worthy or you are not worthy or Tom is not worthy of the job. हाँ, B में to have been holding grudges is fine, to hold grudges is also fine. आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the to be okay. देखिए, to be bitten correct है क्योंकि passive voice में है. For example, passive voice कोई भी to be ले लो. The work is to be, तो फिर done आता है ना थर्ड फॉर्म, है ना? तो to be के बाद verb आता है थर्ड फॉर्म में और bit का थर्ड फॉर्म bitten होता है. bit का थर्ड फॉर्म bitten होता है. So it's all right to be bitten. All right, चलिए 12 ट्राई करते हैं. One can be truthful without having been cruel, but that may not always be the case. देखो 11th में जैसे it is not worthy to have been holding grudges. To have been holding grudges मतलब कि पहले से hold करते आना, और to hold grudges मतलब simple present tense. तो 11th में वो दोनों सही है. But 12th में one can be truthful, that's present tense, without having been cruel. Without having been cruel का मतलब आता है कि हम अभी ट्रूथफुल हो सकते हैं बिना पहले क्रूअल हुए. बट दैट्स नॉट सेंसिबल. नो, ऑथर कहेगा कि हम ट्रूथफुल हो सकते हैं बिना क्रूअल. अभी अभी हम ट्रूथफुल हो सकते हैं. लाइक आई कैन बी ऑनेस्ट विदाउट बीइंग क्रूअल, लाइक एट द सेम टाइम. Whereas without having been cruel हो जाता है कि one can be honest without having been cruel in the past. So that then the sentence becomes मतलब क्या सेंस क्या है, फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि पहले क्रूअल नहीं होके अभी ऑनेस्ट हो सकते हैं. विदाउट बीइंग क्रूअल, अब सेंटेंस का मीनिंग आता है इफ आई चेंज इट एंड मेक इट प्रॉपर, यानी कि हम ऑनेस्ट हो सकते हैं क्रूअल हुए बगैर. मतलब कि विदाउट बीइंग क्रूअल का मतलब कि अभी जैसे मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं जो बोल रही हूँ ऑनेस्टली बोलूँ, पर मैं क्रूअल ना रहूँ. अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट, बट दैट में नॉट ऑलवेज बी द केस. ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा है क्योंकि कुछ लोग जब ऑनेस्ट होते हैं तो वो क्रूअल हो जाते हैं. मतलब दे डोंट बॉदर अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स. तो ऑथर इज सेइंग कि नहीं, ऐसा भी है कि हम ऑनेस्ट हो सकते हैं क्रूअल हुए बगैर. We can be considerate of other people's feelings, but then again, that might not always be the case. So 12, the error is in B. Very good, Adrika. Very good, Vidushi. Both of you got the right answers. Perfect. चलिए 13th का आंसर बताइए. Perfect. Very good. Excellent cannot be achieved through luck. I mean, excellent is an adjective. Here we need a noun. So you guys are right. Excellence. Abstract noun cannot be achieved through luck.
It is the result of a lot of hard work and practice. Very good. 14th try कीजिए. Perfect. To see. It is not uncommon to see. It is common, it is uncommon के बाद हमेशा to see ही आएगा. It is, for example, it is common for me to eat a lot, right? It is common for people in doubting you. नहीं, it is common for people to doubt you. So it is common, it is uncommon के बाद हमेशा infinitive आता है. Infinitive मतलब to plus verb. To see, to eat, to play, to drink, to laugh. It is common for people to laugh at others. It is common for people in laughing at others नहीं होता. It is common for people to laugh at others. मैं examples के साथ repeat क्यों कर रही हूँ? Because if you did not get it, and if you don't know this, तो वो लिखना होगा structure आपको. इसके पीछे logic नहीं है. ये मत सोचना कि अच्छा reason नहीं बताया तो मैं I will search and I'll study. नहीं, कोई logic नहीं है. बहुत सारे words और phrases के बाद ये logical नहीं होता है. ये it's more of a rule कि इस फ्रेज के बाद ऐसे ही आता है या इस वर्ड के बाद इन्फिनेटिव ही आता है या उस वर्ड के बाद जेरेंट ही आता है. तो वहां पे आप कोई मेथड नहीं अप्लाई कर सकते. यू नीड टू नो इट. सो आई एम टेलिंग यू दैट. सो यू आर सपोज्ड टू राइट इट डाउन इफ यू डोंट नो इट. ऑलराइट. इट इज कॉमन, इट इज अनकॉमन के बाद हमेशा अगर वर्ब इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो इन्फिनेटिव आता है. इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस एनी वर्ब. इट इज यूजुअल के बाद भी. इट इज यूजुअल फॉर अस to go out every Sunday. It is common for us to have special classes on Wednesdays. All right, 15th, to conduct special classes on Wednesdays. 15th. The first lesson I got in my military days was that one should love his country better than anything else. Try it out. More than you guys are saying? अच्छा. और बताओ और क्या error है? I will mention this better tomorrow. Nothing else? काफी बार डिस्कस किया है ना. वन आया है तो वन के साथ हिज नहीं आता है. वन शुड लव one's country, not his country. One का ONE apostrophe S. काफी बार किया हमने. जैसे one must be honest to oneself. One should love one's country. 16th try करते हैं. Hardly I have finished reading when my sister snatched the book from me. रन करना. Very good. So basically hardly के साथ when is correct. Hardly when ये तो correct है. But hardly when का मतलब क्या होता है? Hardly when का मतलब होता है कि basically दोनों चीजें या तो आप कह लो ऑलमोस्ट साथ में हुई. नॉट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम. जो पहला है हार्डली के साथ जो एक्शन है वो थोड़ा सा पहले हुआ और उसके बाद वाला एक्शन थोड़ा सा बाद में हुआ. ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. अगर उसको एट द सेम टाइम मानते हो तो हार्डली वाले को सिंपल पास्ट में रख लो. अगर थोड़ा सा पहले मानते हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखो. बट ये आई हैव फिनिश्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट है. व्हेन माय सिस्टर स्नैच्ड द बुक इज सिंपल पास्ट. तो उसके जस्ट पहले मैंने बुक पढ़ना खत्म किया ना. तो इसके जस्ट पहले अगर कुछ हुआ तो पास्ट परफेक्ट. सो हार्डली आई हैव नहीं. हार्डली. अब सुनो ठीक है. पहले मैं एक्शन का करेक्ट करती हूँ. पास्ट परफेक्ट चाहिए. आई हैड.
अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं. When hardly is used as a conjunction. कैसे पता चलेगा hardly conjunction की तरह यूज हो रहा है? hardly के साथ when आएगा, आगे जो when आ रहा है. जैसे either के साथ or आता है, neither के साथ nor आता है, hardly के साथ when. और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट तो यूज कर रहे हैं हार्डली के साथ वाले फ्रेज में, बट इस तरह से नहीं होता है. हार्डली आई हैड फिनिश्ड क्या होता है? हार्डली हैड आई फिनिश्ड. सो दैट्स हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड. सो प्लीज राइट इट डाउन. हार्डली हैड आई फिनिश्ड रीडिंग व्हेन माय सिस्टर स्नैच्ड द बुक फ्रॉम मी. प्लीज राइट इट डाउन. हार्डली हैड आई फिनिश्ड रीडिंग, मतलब मैंने बस खत्म किया ही था और मेरी सिस्टर ने बुक छीन लिया. या हार्डली हैड आई, नॉट आई हैड, हार्डली हैड आई. दैट्स द स्ट्रक्चर. आई हैड से तो मैंने बस ये दिखाया कि पास्ट परफेक्ट में पहले चेंज करो, पहले टेंस करेक्ट करो. टेंस करेक्ट कर लिया कि पहला एक्शन थोड़ा पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में. अब स्ट्रक्चर सही करेंगे. हार्डली हैड आई थिंक आई हैव रिपीटेड इट एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स नाउ. आगे बढ़ सकते हैं. कुछ डाउट है तो लिखिए. आई एम लुकिंग एट योर चैट्स. चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए. 17th. I went to the principal because I wanted to know as to why I was detained. As to नहीं होगा. Correct. Correct. As to नहीं होगा. Very good. He sense नहीं as to का because I wanted to know why. Right. I wanted to know why. Correct. So which part is wrong? C is wrong. Next try कीजिए. I have been living here since 4 years, but no one has noticed my presence so far. Perfect. आप सबका आ गया. I wanted to know why. To know why. Very good. देखिए 18th में आई हैव बीन लिविंग हियर इज फाइन क्योंकि आगे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है. नो वन हैज नोटिस्ड माय प्रेजेंस. तो आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, पर अभी तक देखो सो फार, अभी तक किसी ने मेरा प्रेजेंस नोटिस नहीं किया. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज फाइन. गलत कहाँ है? ऑलराइट, आई टेल यू गाइस. 4 years tells you about a period of time. तो जब पीरियड की बात होती है, पीरियड ऑफ टाइम की, वी डोंट यूज सिंस, वी यूज फॉर. सिंस हम तब यूज करते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है, यानी कि ये हो सकता था आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस, कौन सा साल चल रहा है? 2021. सो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2017, बट नो वन हैज नोटिस्ड माय प्रेजेंस सो फार. ऑलराइट, सिंस आप यूज करते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट बताया रहता है, एंड जब पीरियड बताया तो फॉर. यहाँ पे पीरियड बताया तो फॉर यूज होगा. ऑलराइट, और टेंस में कोई डाउट हो तो गाइस आई सजेस्ट आप टेंसेस का हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ा था, और ये जो सीरीज है डेस्टिनेशन 100 परसेंटाइल, इसी में टेंसेस हमने किया है. आई सजेस्ट वो 2-3 वीडियोस हैं, आप लोग देख लीजिएगा बाद में अगर टेंसेस में डाउट हो. और वो वीडियोस देखने के बाद फिर कुछ डाउट हो तो डू लेट मी नो. 19th बताइए. No sooner did the train start when there was a great rush into my compartment. Very good, Adrika. Perfect. तो जैसे हमने देखा हार्डली के साथ when आता है, नो सूनर के साथ क्या आता है? When it's used as a conjunction, no sooner के साथ आता है than. So it won't be when here, it should be than. Perfect. Wonderful. None can't be used. कहाँ पे? None has noticed my presence.
नन से बेहतर नो वन है क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल हियर. हाँ, नन अगर आप लिखते तो मे बी बेटर ऑप्शन वुड हैव बीन none of the residents, of the society have noticed my presence. तो यहाँ पे नो वन में आप अच्छा स्ट्रेस दे रहे हो इंडिविजुअल्स पे, लाइक नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल हैज नोटिस्ड माई प्रेजेंस, तो कुछ गलत नहीं है नो वन में. नन बहुत ही जेनरिक हो जाता. नन वुड ऑल्सो हैव बीन ऑल राइट, बट बेटर ऑप्शन है कि नो वन पे आप स्ट्रेस दे रहे हो एवरी इंडिविजुअल पे, सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन. नन वुड हैव बीन वेरी जेनरिक, बट नन वुड हैव बीन करेक्ट अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता. None of the residents, none of the people in my society, none of my colleagues, something like that. आप खुद सोचो क्या बेहतर है, no one has done the homework or none has done the homework. No one has done the homework. हाँ, none of the students have done the homework. 20 देखते हैं. तन्मय, that would be the adverbs one. Adverbs का वीडियो बहुत पुराना था, तो maybe I'll take a special class on adverbs as well. But one more thing, ये जो आप कह रहे हैं ना कि this placement, I'll tell you about that. Instead of waiting for that class, not be the case always or not always be the case. Adverb का हम special class में पढ़ लेंगे. बट वो टॉपिक जब मैं करूंगी, मैं उस समय भी एक चीज बोलूंगी और अभी भी आपसे बोलती हूँ कि जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि कुछ टॉपिक्स हैं ऑन विच आई वोंट ट्रस्ट यू ऑन योर साउंड, लाइक कि सुन के सही लगा एंड यू आर गोइंग विथ इट. इफ यू रिमेंबर जब मैंने प्रोनाउंस पढ़ाया था, प्रोनाउन थोड़ा पढ़ा के मैंने क्वेश्चन दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर किया. और तब मैंने कहा कि जब इस टॉपिक में मैंने इतने रूल्स पढ़ाए हैं, दैट मीन्स वी आर मेकिंग कॉमन एरर्स, तो यू डोंट हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस बाय द साउंड ऑफ इट, यू हैव टू गो बाय द रूल्स. ये मैंने कहा था प्रोनाउंस के लिए, और एंड दिस थिंग अप्लाइज टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एज वेल. और तब मैंने थोड़ा सा रेफर भी किया था कि कुछ टॉपिक्स में वी कैन गो बाय द साउंड ऑफ थिंग्स बिकॉज स्टडिंग रूल्स इज वर्स और मोर कम्बर्सम. और वो टॉपिक है एडवर्ब्स. तो हम पढ़ तो लेंगे, आई विल डेफिनेटली डू दैट टॉपिक, बट एट द एंड रूल्स भी करा देंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एडवर्ब्स के रूल्स में आपका जो एनर्जी जाता है, जो टाइम वेस्ट होता है वो रूल्स रटने में, इट्स नॉट वर्थ इट. उससे, क्योंकि एडवर्ब्स में यूजुअली वी डोंट मेक कॉमन एरर्स. यूजुअली हम जो बोलते हैं ना, हम साउंड से जो हम बोलते हैं, जो सुन के हमें सही लगता है वही सही होता है. तो उस टॉपिक में यू कैन गो बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, so it's better not to study the rules of those topics. बट ये चीज मैं वो टॉपिक करके आपको दिखाऊंगी कि व्हेन यू सी कितने ज्यादा उसमें रूल्स हैं. कितने ज्यादा इसलिए बिकॉज कोई एक ब्लैंकेट रूल बहुत केसेस में अप्लाई ही नहीं होता है. दैट्स वाई एक एक वर्ड को लेके होता है, जैसे कि टुमारो, आई विल सी यू टुमारो. तो टुमारो इज अ वर्ड जो कि सेंटेंस के एंड में बेस्ट प्लेस्ड होता है. हाँ, बिगिनिंग में भी प्लेस करोगे तो गलत नहीं है, बट एंड में इट इज बेस्ट. लाइक टुमारो आई विल सी यू इज ऑल्सो करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग. तो इस एक वर्ड को लेके फिर हमने डिस्कस किया, तो वही with different words the rules keep on changing, so they just get a lot, they become a lot for you to study. And mostly, and eventually you end up going by the sound of things. So that's the case with that topic, the one you are asking about. But पढ़ लेंगे फिर भी. Okay, the next one, do you object to me sitting in this room and reading a book for a short while? Okay, 20th I'll tell you guys the answer. ये टॉपिक अलग है. डू यू ऑब्जेक्ट टू, है ना. अगर आपको ध्यान हो तो डू यू ऑब्जेक्ट टू के बाद क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो आया है डू यू ऑब्जेक्ट टू मी, ठीक है. बट यहाँ पे सिटिंग इज नॉट अ वर्ब, यहाँ पे सिटिंग इज अ जेरेंड, क्योंकि वर्ब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक्शन ऑब्जेक्ट है. तो क्या तुम इस नाउन, सिटिंग हियर इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन. फॉर एग्जांपल, डू यू ऑब्जेक्ट टू दिस मूवी. तो देख रहे हो, डू यू ऑब्जेक्ट टू के बाद एक नाउन चाहिए. तो सेटिंग यहाँ पे जेरेंट है, यानी कि जेरेंट इज बेसिकली अ वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म विच वर्क्स एज अ नाउन. तो जब इस तरह से जेरेंट यूज होता है ना, तो इट्स नॉट मी सिटिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डू यू ऑब्जेक्ट टू
हाँ, मान लो मैंने आपको फोन कॉल किया, तो डू यू ऑब्जेक्ट टू मी कॉल? डू यू ऑब्जेक्ट टू मी फोन कॉल? नहीं, क्या कहेंगे? डू यू ऑब्जेक्ट टू माई फोन कॉल, राइट? तो डू यू ऑब्जेक्ट टू मी कॉलिंग? नहीं, डू यू ऑब्जेक्ट टू माई कॉलिंग, क्योंकि वहां पे हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो डू यू ऑब्जेक्ट टू मी सिटिंग नहीं होता है, डू यू ऑब्जेक्ट टू माई सिटिंग। तो योर एरो इज इन द ए ऑप्शन। डू यू ऑब्जेक्ट टू माई सिटिंग इन दिस रूम? प्लीज राइट इट डाउन। डू यू ऑब्जेक्ट टू माई, क्योंकि सिटिंग यहाँ पे नाउन है और माई उसका बस पॉजेसिव फॉर्म हो जा रहा है। मेरे बैठने से तुमको यहाँ पे ऑब्जेक्शन है क्या? मेरे बैठने से, राइट? मेरे, माई। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के हम कर लेंगे बार बार। यू नो, व्हेन द वंस हु हैव बीन रेगुलर, आपने देखा है कि कुछ कॉन्सेप्ट जैसे सब्जेक्ट वर्ब में भी है अलोंग विद, टुगेदर विद, इतना रिपीट हुआ कि इफ यू आर रेगुलरली डूइंग इट तो फिर वो आपको एकदम क्लियर हो जाता है। वॉज के बाद सब्जेक्ट फॉर्म, इट वॉज आई, इतने बार किया कि क्लियर हो गया। तो ये भी हम, दिस द फर्स्ट टाइम यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, द 20th वन, ये बार बार करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। Gerund is basically a verb in the ing form, जैसे कि यहाँ पे sit है, sitting, but it's not used as a verb, it is used as a noun। क्योंकि आप कोई भी फ्रेज, और यहाँ पे वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। तो क्या तुम ऑब्जेक्ट करते हो? ऑब्जेक्ट करते हो टू वॉट? तो यहाँ पे वॉट एक नाउन होगा ना। तुम ऑब्जेक्ट करते हो मेरे यहाँ बैठने से, तो मेरा यहाँ पे बैठना, माई सिटिंग, इज नॉट रियली लिटरली talking about the action of sitting, it's talking about this thing that you're objecting to or you're not objecting to. So do you object to my sitting? For example, last time we discussed gerund, reading is my hobby, तो वहां पे मैं पढ़ाई कर नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ अपने हॉबी का नाम। So reading becomes a gerund. But yeah, if I say I am reading, then reading is a verb, क्योंकि वहां पे वो action चल रहा है, वो action है। So 21, what should be the answer of 21? Hardly had I left the school than it began to rain. Perfect. Wonderful. Adrika. ये तो आप सबको बताना है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। परफेक्ट, वेरी गुड तन्मय। हार्डली के साथ क्या आता है? अभी देखा था 16th में, हार्डली के साथ आता है व्हेन, तो इट शुड, नो सूनर के साथ आता है दैन। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द रूम व्हेन इट बिगैन टू रेन। तो मैं बस रूम से निकला ही था या निकली ही थी और बारिश शुरू हो गई। चलिए, ट्राई आउट 22। See, Tanmay, 22 is the one you were asking about. You asked about always, but this is also the same thing. Placement of adverb. तो मीनिंग समझ के आंसर करो। एडवर्ब के प्लेसमेंट में ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड देन ऑल्सो ट्राई गोइंग बाय द साउंड ऑफ इट एंड देन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। वेरी गुड, रन करना। माई सिस्टर ओनली ड्रू ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, केवल बनाई ऑन वन साइड, नहीं, ड्रू केवल ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, सो इट शुड बी माई सिस्टर ड्रू ओनली ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। माई सिस्टर ड्रू ओनली, दिस शुड कम। केवल पेपर के एक साइड पे। अब अगर आपको लगता है कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि सिस्टर केवल ड्रॉ की, मे बी राइट नहीं की, यू नो, शी डिड नॉट राइट, शी ओनली ड्रू, तब क्या होता? तो फिर वन साइड नहीं लिखा रहता, लाइक शी ओनली ड्रू ऑन द पेपर, यू नो, लाइक शी डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स ऑन द पेपर। तो वो तो वन साइड पे लिखने की जरूरत नहीं थी, शी ओनली ड्रू ऑन द पेपर लिख देते। ऑन वन साइड लिखा, यानी आप किस पे एम्फोसिस दे रहे हो कि उसका ड्राइंग केवल वन साइड ऑफ द पेपर पे हो रहा था, वो कर रही थी। Yes, even this is correct. My sister drew on only one side of the paper. ये भी correct है तन्मय, but I did not go with that क्योंकि my sister drew only on one side भी correct है
Or if I'm going with this, what I've written here, so I can mark B as the error. But if I go with the option that you have written, then we'll have to mark two errors, no, in B and C both. वो option नहीं है कि दो जगह mark करें. That is why. 23 देखते हैं. Try out. All of you guys try out 23. वेरी गुड तन्मय, परफेक्ट. थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अलोंग विथ के केस में वर्ब पहले सब्जेक्ट को फॉलो करता है, फिर मैंने आपको बताया कि यही चीज टुगेदर विथ के केस में भी होती है, अकम्पनीड बाय के केस में भी होती है, विथ के केस में भी होती है. मैंने बोला भी कि व्हेन विथ एक्ट्स एज अ कंजंक्शन. तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विथ ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो ये जो आपका वर्ब है ये किससे अग्री करेगा? पहला सब्जेक्ट यानी कि मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, तो ये होगा हैज. ठीक है. along with, together with, accompanied by, in addition to, ये सब जब conjunctions की तरह यूज होते हैं तो verb पहले subject को follow करता है. So it should be, in this case, motivating employees. तो singular है, motivating is singular. So motivating employees has become increasingly difficult. यहाँ पे motivating is a gerund again. चलिए 24th देखिए. I had worked in the school for 25 years. For 25 years आया है ना, तो past perfect tense में नहीं होगा. I had worked नहीं होगा. Present perfect tense में होगा. जो हमने बताया कि period के बारे में बता रहे हो. दूसरी बात ये है कि this school लिखा है, ये school. ठीक है, भले ही वो 25 साल खत्म हो चुके हैं, but it should be present perfect tense. I have worked. मैंने इस स्कूल में 25 साल काम किया है. I have worked in the school for 25 years. (25) ट्राई कीजिए. Yes, I have been working भी हो सकता है, एकदम हो सकता है. Two of you have written that. I've been working in the school for 25 years is also perfectly fine. इसका मतलब ये कि 25 साल हो चुके हैं और आगे भी आप काम करते रहेंगे उसमें. Try out 25. Very good, Adrika. Very good, Vidushi. It should be the man whom I have often met. I have often met him, right? So him का corresponding form क्या है? Whom. WHOM. जिससे मैं मिली हूँ या मिला हूँ. तो I have often met that person. So I am the subject and that person is the object. So it should be whom. I have often met him. I have often met her. Try out the next one. Correct, Tanmay. Perfect.
बेटर ऑप्शन क्या है? ओके, यू गाइस फिगर आउट। या ये करें कि पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ कुरान वर रेड, या फिर पेज आफ्टर पेज ऑफ कुरान वॉज रेड। रीड द एंटायर थिंग, एंड तक पढ़िए, माइंड तक, और बोलिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ग्रामेटिकली सही है। पेजेस आफ्टर पेजेस भी करेक्ट है, तो वर होगा, पेज आफ्टर पेज के बाद वॉज होगा। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर सेंटेंस विच शुड बी अ बेटर ऑप्शन, कि क्या करें? यस, क्योंकि आगे लिखा है इट गेव ग्रेट कंसोलेशन टू हिज माइंड, इट, तो it refers to reading the Quran page after page, right? तो was read better option है ना, आगे भी it यूज किया है एज अ प्रोनाउन, सिंगुलर रखा है, तो इट्स बेटर कि आप इनिशियल पार्ट को भी सिंगुलर रखें, पेज आफ्टर पेज ऑफ कुरान was read। एक और बात है कि जब किसी होली बुक का नाम आता है, ठीक है, होली बुक, कोई भी होली बुक उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, गीता उठा लो, तो उसके बाद, उसके पहले आई एम सॉरी क्या लगता है? द डेफिनेट आर्टिकल। सो वो एरर भी आप रेक्टिफाई कर देंगे अगर आप बी मार्क करते हैं तो। ऑफ द कुरान, आई रीड द बाइबल, आई हैव रेड द भगवत गीता, तो लिख लो होली बुक्स की बात कर रही हूँ, होली बुक्स, ऑलराइट। नेम्स ऑफ होली बुक्स आर प्रोसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द। नेम्स ऑफ होली बुक्स आर प्रोसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द। आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया होगा, तो द कुरान, द गीता, द बाइबल, ऑलराइट। ट्राई आउट 35। तन्मय, ग्रामेटिकली तो पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस, ऑल इज ऑल राइट, आई मीन डजंट मेक अ डिफरेंस। बट या यू आर राइट, अगर सटल डिफरेंस हम देखें कि इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दैट सटल नुआंस, तो आप फास्ट रीडिंग कन्वे कर सकते हो बाय यूजिंग पेजेस आफ्टर पेजेस। यू आर राइट। या सो 35, दो आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट फ्रीडम मीन्स वन, टू डू योर ओन थिंग, है ना, टू डू कर दो, या फिर फ्रीडम मीन्स डूइंग योर ओन थिंग, नॉट टू बी डूइंग। लाइक फॉर मी और टू मी, फ्रीडम मीन्स being happy, or freedom means to be happy, but freedom means to be being happy, no. uh, to me freedom means working hard, freedom means to work hard, freedom means to be working hard is wrong, to be working, right? तो आप लोगों ने जो आंसर लिखा करेक्ट है, टू डू या फिर डूइंग, सिंपल। चलिए ट्राई आउट 36। And right now don't attempt these two, no? Not done with the concept, so don't attempt that. All right, poets, you're saying better than any poets? तो ये तो आप जानते हो कि जब भी हम
सुपरलेटिव दिखाने के लिए कंपैरेटिव यूज करते हैं, जैसे टॉम इज द टॉलेस्ट इन हिज क्लास, करेक्ट है, या फिर टॉम इज टॉलर दैन, अब मैं अगर ये कहूँ टॉम इज टॉलर दैन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो एनी स्टूडेंट में तो टॉम भी आ जाता है, तो मतलब आएगा कि दूसरों से तो टॉल है ही, खुद से भी ज्यादा टॉल है, विच हैज नो मीनिंग. सो राइट नाउ व्हेन वी से शेक्सपियर वाज बेटर देन एनी पोएट, ठीक है, पर एनी पोएट में तो शेक्सपियर भी आ जाएगा, तो वो दूसरों से भी बेटर था और खुद से भी बेटर था. मेक्स नो सेंस. यानी कि एनी के साथ क्या चाहिए, एनी अदर पोएट. शेक्सपियर वॉज बेटर देन एनी अदर, ताकि अदर लिख के हम शेक्सपियर को उस कैटेगरी से निकाल दे रहे हैं ना, ताकि शेक्सपियर अलग हो जाए और दूसरे अलग हो जाए और फिर हम कहें शेक्सपियर दूसरों से बेहतर था. So Shakespeare was better than any other poet of his days, according to critics. Any other poet भी सही है, poets लिखने का जरूरत नहीं है. Any other poet, like you are, she is better than any other students, नहीं, any other student. Alright. Do you have any other doubts? नहीं. Do you have any other doubt? हाँ, I can say do you have any doubts or do you have other doubts? But do you have any other doubt? Okay, please try out 27th here. Numbering. Right, yes, Galushi, correct. चलिए 27th ट्राई कीजिए. One day a baker decided weighing the butter to see if he was getting a pound and found that he was not. Perfect, all of you got it. तो हम कुछ भी डिसाइड करते हैं, लाइक आई हैव डिसाइडेड वर्किंग हार्ड, नहीं, आई हैव डिसाइडेड टू वर्क हार्ड. I have decided writing cat, no, I have decided to write cat. I have decided taking the exam, no, I have decided to take the exam. अच्छा, गिविंग द एग्जाम नहीं होता है, ये ध्यान रखना. ओके, वन डे अ बेकर डिसाइडेड टू वे. हिंदी में हम कहते हैं कि हम एग्जाम देने वाले हैं या लिखने वाले हैं. इंग्लिश में कहते हैं आई एम गोइंग टू राइट द टेस्ट और द एग्जाम. आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम, नो दैट्स रॉन्ग, आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम. ठीक है, टू वे, डिसाइडेड टू वे. परफेक्ट, ऑल ऑफ यू गॉट इट. नेक्स्ट बताइए 28. स्ट्रक्चर बेस्ड है. 28 इज like 27 is structure based, 28 is also structure based. अच्छा, बटर के बाद as to see नहीं चाहिए, to see is correct. Decided to weigh the butter to see if he was, like I decided to meet her to check if she is fine. So I decided to meet her as to check, नहीं, to check if she is fine. So to see is fine. 28. ग्रेटिफिकेशन इज लाइक सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो आप पैरेलल कंस्ट्रक्शन करके बताओ, जैसे देर इज मोर सेटिस्फैक्शन फॉर हेल्पिंग अदर्स. ये करेक्ट है क्या? अगर एक सिंपल सा मैं लूं, देर इज मोर ग्रेटिफिकेशन, तो सेटिस्फैक्शन कर देती हूँ. There is more satisfaction for helping others. Is that right? Very good. So there's more satisfaction in helping others, right? वैसे ही there is more gratification in being a caring person. और आगे लिखा भी है than and just being a nice person. There's more gratification in being. There is more happiness in helping others. There's more satisfaction in working hard, not for working hard. आगे ये try कीजिए 29th. Relationships are built in kindness, understanding, and self-sacrifice, not on jealousy, selfishness, puffed up egos, and rude behavior.
Only Adrika has answered this one. हाँ, पूरा पढ़ो तो दिख भी जाएगा। एक पहले में लिखा है बिल्ट इन, दूसरे में लिखा है ऑन, यानी कि बिल्ट ऑन। तो सही क्या है? रिलेशनशिप्स आर बिल्ट इन दीज थिंग्स और दे आर बिल्ट ऑन दीज थिंग्स। ये जो भी चीजें लिखी हैं, ये क्या हुआ? रिलेशनशिप के फाउंडेशन हुए हैं। तो समथिंग इज बिल्ट इन अ फाउंडेशन नहीं ना, समथिंग इज बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन। So relationships are built on kindness, understanding, and self-sacrifice, not on jealousy, selfishness, puffed up egos, and rude behavior. Alright? चलिए, अब ये आगे के questions भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे. We'll do it at night, 9 p.m. Which does not mean I'm calling it a day for now. You guys have to try out this passage. ये passage attempt करना है. तो ये देखिए, यहाँ पे passage शुरू हो रहा है. Starts here. This is the first slide. This is the second slide. And these are the questions. Third slide में भी थोड़ा सा है. Questions देखिए. Which of the following is not included in the author's list of don'ts of breakup etiquette? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि keywords लिख लीजिए. Specific question है, so whenever these ideas come, you can. Where is my pen? So that we are on the same page. क्या है? क्या लिखेंगे? Breakup etiquette. Of course, I mean, उसका do's and don'ts क्या है देखना पड़ेगा आपको. Right. दूसरा क्या है? The author insinuates. Insinuate is to state something indirectly. मतलब hint देके बोलना. That which of the following breakup actions would have the direst of consequences, यानी कि worst consequence. The worst consequence of breakup action. हम breakup फिर से नहीं लिखेंगे. Idea मिल गया. The passage seems to be about breakup. दो question में आया. Worst consequence. कौन से breakup option का सबसे खराब consequence हो सकता है? क्योंकि लिखा है हो सकता है ना, would have. Third देखते हैं. A person who has just had a messy breakup wishes to catch the next flight to spend a year in Spain. The author would recommend such a person. तो यहाँ पे ये मुझे नहीं लगता है कि इसका literally आंसर दिया होगा. ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली ऐसा होता है कि ऑथर का एटीट्यूड हमें समझना होता है एंड देन वी हैव टू टेक अ कॉल कि इस एटीट्यूड का इंसान या फिर जो भी ऑथर ने स्टैंड लिया है ऐसे सिचुएशन में क्या रिकमेंड करेगा. सो दिस इज मोर ऑफ अ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन. आइडियली ये सिनेरियो जब भी इस तरह से प्रेजेंट रहता है क्वेश्चन स्टेम में, दैट मीन्स द सिनेरियो इज नॉट गिवन इन द पैसेज. यू जस्ट नीड टू नो द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर. यूजुअली तो यही होता है एंड दिस कम्स अंडर क्रिटिकल रीजनिंग. The author mentions that love isn't a one-shot only experience in order to suggest. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? One shot only experience. But the author suggests कि ऐसा नहीं है. तो author mentions कि ऐसा नहीं है. It's not a one-shot only experience. So what is the author suggesting through that? एक और question. Fifth one. The author counsels. Counsels मतलब counsels is advice, right? Advises that if your new date has left the door slightly ajar with his ex, then you should. Door ajar with ex. हमने vocab में किया था, remember? Ajar is slightly open. दरवाजे के लिए किया था. खिड़की भी थोड़ी सी ओपन रहती है तो हम कहते हैं the window is ajar. Slight ajar means slightly open. Ajar. Oh, I think I had done that in the plus session. Plus session में किया था शायद. स्पेशल में तो नहीं किया था, प्लस में किया था बिकॉज आई रिमेम्बर. हाँ, निमोनिक्स के थ्रू किया था. उसमें हमने एक जार लिया था. जार का लिड थोड़ा सा ओपन है. दैट वी हैड यूज्ड एज निमोनिक पिक्चर मेमोरी एड. ओके, तो पर दरवाजे खिड़कियों के लिए यूज करते हैं. अजार इज स्लाइटली ओपन. ऑफ कोर्स इवन एक जार का भी ढक्कन थोड़ा ओपन हो तो अजार कहेंगे. तो कीवर्ड्स आई होप यू गाइस हैव रिटन डाउन. Now this is the passage. Take your time, read it. If you're attempting it now, do let me know when can I move on to the next page.
All right. All right.
Yes. So for the first one, I don't think I need to go back. If you have read the passage properly, you would get an idea कि author जो है sensible है. The author is giving the idea that if you have broken up, then you should not, uh, keep in touch with that person unless it's required, formally required. Like if you share a lease or a pet, don't get in touch with the person. Don't keep on trying to call the person or messaging the person. Don't follow the person on Facebook. So author is very rational kind of, right? तो एक irrational सा option यहाँ पे है, not included in the list of don'ts. क्या वो कहा don't communicate in any way unless it is to settle formal matters, ऐसा कहा. Don't cling to your ex, पीछे मत पड़ो and all of that कहा. Don't forget to get even to heal your wounds. To get even मतलब बदला लेना, to take revenge. Of course author ने ऐसा कोई idea नहीं दिया था. Author बहुत positive type का है या type की है. So the answer should be C. Don't pretend you're unaffected. Don't pretend that you're unaffected. That's also a call for attention, right? I mean, that's a very obvious option. Revenge. ये कह रहा है don't forget to take revenge. मतलब कि revenge लो. Definitely author has not said कि revenge लो. So yes, you guys are right. It should be C. Don't forget to get even. मतलब don't forget to take revenge. Is the author asking us to take revenge? No. So the answer is C. Second, देखिए, for second, I think I'll take you back to the passage. क्योंकि the second is more of insinuating. The author insinuates which of the following would have the worst consequence. एक बार आप सारे options देख लीजिए. Then I'll take you back to the passage. Kicking yourself when you are down by becoming careless about your dressing sense and personal hygiene would have the worst consequence. Like being careless about dress and personal hygiene would have the worst consequence. Doing something dangerous in a fit of anger that can get you on the wrong side of the law, मतलब कि आपके against कुछ legal action हो सकता है. That seems to be worse than A, right? Stalking your ex on Facebook to check whether you have damaged her sufficiently or not would have worst consequence. Giving in to your ex, giving in matlab agree karna. If your ex is pushing for friendship, would that have the worst consequence? The worst consequence kiska ho sakta hai? So I think I'll take you guys back because I see different answers coming for this B, C combination. तो वापस चलिए और देखिए. और ये बताइए कि आपको क्या, I mean, why do you feel, whatever is the answer, why do you feel that is the correct answer? बहुत सारी चीजें दी हैं. Don't do this, don't do that. यहाँ पे लिखा है don't try to be friends, don't seek revenge, don't key his car or destroy his stuff. पर यहाँ पे लिखा है don't do something that can land you in legal trouble. नहीं, कैसे लिखा है? And never ever do something that could land you in legal trouble. So difference देखिए. फिर लिखा है don't lock him out, don't communicate, don't do this, don't do that. आगे भी बहुत कुछ लिखा है don't post anything, don't Facebook stalk your ex, uh, don't get a new haircut, don't give her, जो भी हो, don't let a breakup destroy hope. पर एक चीज के लिए don't नहीं लिखा है. किस तरह से लिखा है? Never ever do something. So that इस तरह से लिखा है. Instead of just writing don't do something that could land you in legal trouble, author ने क्या लिखा है? Never ever do something that can. Of course यानी कि author इस पे सबसे ज्यादा stress कर रहा है कि this is the worst. जो ये मत करो और ये तो बिल्कुल ही मत करो. Don't take revenge, don't be a bad person, don't Facebook stalk, and never ever. तो of course आप जहाँ पे never ever लिखे हो that would have the worst consequence, इसलिए उस तरह से लिखा है. So that would land you in legal trouble. So that should be which option? Tanmay got it, Adrika got it. Which option is that? B. Anything that could get you in legal trouble. Insinuate किया, directly नहीं बोला, पर उसके वर्ड्स के थ्रू हम समझ गए. आगे देखते हैं. चलिए बताइए इसका आंसर. क्रिटिकल रीजनिंग है. आई डोंट थिंक वी नीड टू गो बैक फॉर दिस. Person who has just had a messy breakup wishes to catch the next flight to spend a year in Spain.
अभी ब्रेकअप हुआ, अब सोच रहा है कि नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के हम तो चले स्पेन 1 साल के लिए। ऑथर ऐसे इंसान को क्या रिकमेंड करेगा? ओके, ऑथर का एटीट्यूड, यू guys write anything here? I can't see. ठीक है, ऑथर का एटीट्यूड देख लो। Of course, author एक rational person है, that's what we see. Read this portion, take a moment, read this portion, then I'll go back to the questions. तो ऑथर क्या बोल रहा है कि कुछ भी रैश डिसीजन नहीं लेना है, वेट करना है, राइट? डोंट गेट अ हेयर कट, अचानक से बाल पूरे काट दिए, सब। डोंट मेक एनी ड्रास्टिक चेंजेस फॉर अ व्हाइल, डोंट टेक रैश डिसीजंस। तो जो इंसान सोच रहा है कि ब्रेकअप हुआ, अब कल की फ्लाइट पकड़ के स्पेन चले जाते हैं 1 साल के लिए, ऑथर कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, डोंट टेक रैश डिसीजंस। A, take a break as one major change can inspire even more major change. मतलब कि जाओ स्पेन, take a break, go Spain and take that break. तो A तो नहीं होगा। Wait for a few months before acting on it, right? If at all you're acting on it, wait for a few months because the author has suggested don't take rash decisions. और C क्या कह रहा है? Cancel the ticket. वो भी तो rash ही हो गया। अभी टिकट किया भी है या नहीं? He wishes to catch the next flight. ये नहीं बोला कि टिकट कर दिया। Seek solace and sanctuary in some domestic wellness resort instead. Okay. दूसरे जगह खर्चा करो। ऐसा सिनेरियो नहीं, ऐसा पैसेज। ऑफ कोर्स आ सकता है, कैट में आ सकता है, स्नैप में आ सकता है, एनमैट में भी आ सकता है, जैट में कभी नहीं आएगा। दिस वुड बी टू इजी फॉर जैट। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? Yeah, a one shot only experience मतलब thing that can be done only once. But here the author is saying it is not a one shot only experience. That means it can happen again. So the option that is saying that it can happen again would be the right option. And which option is that? B. Right. It is not a one shot only experience. मतलब ऐसा नहीं है कि it can only happen once. And the last one, that if your new date has left the door slightly ajar with his or her ex, with his ex, then you should. What should you do?
If the question is easy, all of you should be fast with it, right? But I see only 3 answers here. तो या 2000 के बारे में क्या लिखा है? हेड ऐसा अगर कुछ होता है, तो आपको you will make your life easier by heading toward the nearest exit sign. That means run away. Run as fast as you can. So you're right. इसका correct answer क्या है? Run away from him. Correct. C. Perfect. All of you got it. It is C. Very good. चलिए ये next passage is picked up from CAT itself. It's a CAT passage जो next one है. अभी नहीं करेंगे, 9 o'clock को करेंगे because it will take more time. अभी नहीं हो पाएगा. So let's finish off with the grammar portion. Let's try out the last few questions of grammar and then we'll call it, I can't even say call it a day because we have another session at 9 p.m. as well. So 30. He resolved being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic to the striving and tolerant of the weak. Which part is incorrect in question number 30? Which passage, Adrika? The next one? Or the one that you did right now? The one we just finished. All right, okay. I will share it. Okay. Chaliye. 30. He resolved being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic to the striving. सही है. Be sympathetic with them तो नहीं कहते. Be sympathetic to them. Be tender with someone is all right. Be compassionate with us all right. But I resolve. क्या आप कोई resolution लेते हैं तो क्या कहते हैं? I resolve. क्या? Okay, New Year's resolution लेते हो ना? तो what would you say? I resolve working hard this year. I resolve working hard this year. Correct? I resolve to work hard. You resolve to do something. So he resolved to be tender, not being tender. He resolved to be. Okay? You resolve to do something. You don't resolve doing something. Resolution wala resolve. So he resolved to be tender. 31 बताइए. देखो टॉलरेंट के साथ ऑफ आता है. मान लीजिए आप किसी का बिहेवियर टॉलरेट कर रहे हो तो आई एम टॉलरेंट टू अ बिहेवियर नहीं, आई एम टॉलरेंट ऑफ अ बिहेवियर. So it's all right. Tolerant के साथ off is all right. 31. Companies spend close to $1 million for a 30-second advertisement between a major event. Between a major event कैसे हो सकता है? Between two major events हो सकता है ना? हाँ, अगर आप कह रहे हो इवेंट के मिडल में तो इन बिटवीन अ मेजर इवेंट होगा. ऐसे लिखोगे इन बिटवीन अ मेजर इवेंट. ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे, या तो इन बिटवीन अ मेजर इवेंट या फिर बिफोर अ मेजर इवेंट या आफ्टर अ मेजर इवेंट. बट बिटवीन नहीं, क्योंकि बिटवीन तो टू इवेंट्स होता, दो इवेंट के बीच में. एक इवेंट के बीच में कहीं पे हो रहा है तो इन बिटवीन अ मेजर इवेंट. सो डी इज इनकरेक्ट. किसी का आया क्या? नहीं आया. ऑलराइट. Okay, next one. People who do not want to adhere to any moral standards keep changing the definition of morality on saying nothing is right or wrong, only your thinking makes it so. Chaliye, I'll wait for the answer of this one because I'm very sure that all of you can answer this. So please do.
ट्राई कीजिए, सबसे हो जाएगा ये. एवरीबody would be able to do this one. You just need to analyze it properly. Perfect. Very good. Wonderful. Very good. Sabka aa gaya. By saying people who do not want to adhere to any moral standards keep changing the definition of morality by saying this, by saying that. Very good. Perfect. चलिए अभी के लिए एक और लास्ट ट्राई कर लीजिए 33 and then we'll call it a day for now and we'll catch up at 9 p.m. Last for now. Unless you build your self-esteem, you cannot achieve the success in your life. यहाँ पे क्या है सक्सेस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. So what's wrong here? Tell me. Hint दे दिया मैंने. So is not required. Yeah, you cannot achieve success in your life. ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं. Let's catch up at 9 p.m. I did not tell you guys about, I told you about the subscription, but the price points. If you guys are going for the plus subscription or if any friend of yours is going for the plus subscription, तो उन्हें बता दीजिएगा कि 6 months का price point है 16,400, 12 months का 22,550 and 24 months का 32,800. More importantly, उन्हें ये बताइएगा कि they should use my code Sharmaji and they will get a 10% off. And if you are going for it, then the information is for you as well. अगर आप नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, तो these are very good plans for you. Actually, these are brilliant plans for you. Iconic ones. 12 months, the price point is 39,500. 10% off if you use my code Sharmaji, and 24 months, 59,999, and you get 10% off. Use my code. And of course, Iconic में सब कुछ मिलता है आपको. Individual doubt solving, you get पूरा आपका कोर्स स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है. You get all the materials, so definitely a great option for you to have. Alright guys, और अभी अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you also get 3 months of subscription free along with that. ठीक है, तो मेरा कोड याद रखना शर्मा जी. और अगर अभी तक